By learning, you will teach. By teaching, you will learn. Exactly, guys. Our team knows the importance of learning. That's why we are here to make you learn and learn something from you as well. Because our team believes that learning as a process can never be unilateral or one-sided. It is always mutual in nature. Hey everyone, what's up guys? Hope you're having a great time and enjoying your studies in this COVID-19 crisis. Well, I am Devansh, your geography trainer. Welcome to our channel Graduate Yourself, where we redefine learning. It's a unique platform of service of the student, service by the students, and service for the students. Our channel provides you with the quality content and a detailed insight into any concerned topic. Well, today I am here with a very interesting as well as important topic regarding the urban settlements, that is the functional classification of towns. Now, this video is going to be the fourth and final part of the human settlement series. Previous 3 parts are already available on our channel. I hope you have seen it. If not, then please go and watch it. The links have been given to you in description box. After watching previous 3 parts, you will be able to form better opinion and will also be able to conceptualize this lecture in a better way. Now, let me briefly tell you what all stuffs we have studied in this human settlement series yet. Well, in first part, we have covered the topics like what is human settlements, origin of settlements, and the classification of settlements, the very basic classification of settlements into the rural as well as urban settlements. In second part, we dealt with the topics like types of rural settlements, functions of rural settlements, and the patterns of rural settlements. As far as the third part is concerned, third part basically deals with the urban settlements, and in third part we have discussed the topics like what is urban settlements, the origin of towns, evolution of towns in India, and we have also seen the classification of Indian towns. Well, today we are going to touch very interesting and important topic of the urban settlements, which is the functional classification of towns. So basically we will see how the towns are classified based on the functions which they perform with examples. Now, before starting, let me tell you that please watch this lecture till the end so that you are able to absorb all the stuffs properly. And I'm having one question for you to answer at the end of the video. Okay, so without wasting any more time, let's get started. And yes, don't bother about mode of lecture. I will keep it bilingual. Okay, so let's see what is exactly the functional classification of towns. Okay, so you must be getting an idea from the name of the topic that what we are going to study in this lecture. Well, we are going to see the towns which are classified according to the functions which they performed. So let's see how. Well, the functional classification of towns attempts to categorize towns and cities according to their economic functions, thereby identifying their roles within the urban systems. Okay, so it is an attempt to categorize the towns and cities according to their economic function. Not only economic function, rather this is a dominant form of it. So whenever we categorize the towns and cities according to their functions which they performs or for which they are very famous, then that can be termed as the functional classification of the towns, thereby identifying their roles within the urban systems. Exactly, through the functional classification of town we can categorize or we can identify the individual roles or the particular function which is performed by any town within that urban system. Exactly, means the towns and cities, they are the integral part of the urban system. तो यही है बेसिकली. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन की.
Now, moving on, most of the classifications of towns have been done on the basis of the functions. जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर जितने भी टाउन्स आप अपने आसपास देखते हैं या एक डोमिनेंट फॉर्म जिनका प्रेजेंट है ऑल ओवर कंट्री, दे हैव बीन क्लासिफाइड इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस. मीन्स वो जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसी के बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया है. आगे मैं आपको एग्जाम्पल्स की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. नाउ, some towns and cities specialize in certain functions and they are known for some specific activities, products or services. जी हाँ दोस्तों, कुछ टाउन्स और सिटीज ऐसे होते हैं मीन्स दे आर स्पेशलाइज इन सर्टेन अमाउंट ऑफ फंक्शंस. सॉरी, नॉट अमाउंट, मीन्स सर्टेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस. कुछ टाउन्स अपने स्पेशलाइज या स्पेसिफिक पर्पस के लिए या फंक्शन के लिए ही जाने जाते हैं जिनमें उनकी स्पेशलिटी होती है या जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं. इट कुड बी एनी स्पेसिफिक एक्टिविटी, या तो वो वहाँ कोई ऐसी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या कोई भी स्पेसिफिक एक्टिविटी हो रही हो जो फेमस हो या जो उसे बाकी टाउन से डिस्टिंग्विश करती हो. और इट कुड बी एनी प्रोडक्ट, मीन्स अगेन इट कुड बी अ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन हब. देन इट कुड बी एनी सर्विस एज वेल, वो किसी भी तरह का सर्विस भी हो सकती है जिसमें उस टाउन की स्पेशलिटी होगी या उसके लिए वो यूनिक होगा, सो दैट वी कैन कैटेगराइज इट. मैं आपको बेसिकली एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ कि वाई डू वी नीड द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स. आखिर हमें फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी या इन्हें फंक्शनली क्लासिफाइड क्यों करना पड़ा, आइए जानते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे कि टाउन किसे कहते हैं. दोस्तों, हम सब जानते हैं कि टाउन इज़ बेसिकली एन अर्बन एरिया विथ स्ट्रीट, रोड्स, बिल्डिंग्स and bridges and lots of infrastructures, and whose workforce or the most of the population is employed in either secondary, tertiary or quaternary sector. This is basically what we can call as a town, urban town. अब ये जो टाउन्स या सिटीज़ होते हैं इन सब के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. वो क्या क्या होते हैं, आइए जानते हैं. टाउन्स या सिटीज़ दोस्तों एक तरह से इंडस्ट्रियल सेंटर्स हो सकते हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स हो सकते हैं, दे कैन बी बिजनेस सेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हब, all sorts of transportation with communication facilities etc. So this is what we can term as town or the features of the towns. या बेसिकली एक तरह से इन्हीं सब चीज़ों को टाउन्स के फंक्शंस भी हम कह सकते हैं. पर एक चीज़ जो हम नहीं नोटिस कर रहे हैं टाउन्स के टर्म में वो है कि जो वो एडिशनल फंक्शंस करते हैं. कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि किसी भी टाउन की कोई भी स्पेशलिटी या यूनिक फंक्शन हो सकता है जिस वजह से वो टाउन फेमस हो या बेसिकली वहाँ पे वो फंक्शन एक डोमिनेंट फॉर्म में पाया जाता हो. बट आज के समय में अगर आप देखें तो टाउन्स आर मोस्टली ऑफ द डाइवर्सिफाइड फंक्शंस, मतलब एक टाउन्स कई सारे फंक्शंस कैरी ऑन कर रहे हैं. हाँ, उनकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा ज़रूर हो सकती है, विच गिव देम डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. इतने सारे फंक्शंस के बीच हम टाउन्स को आइडेंटिफाई करने में या क्लासीफाई करने में प्रॉब्लम आती है. दैट्स वाई इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट देयर मस्ट बी अ classification of the towns on the basis of the dominant function it performs. जो भी किसी टाउन का एक डोमिनेंट फंक्शन होता है जो मेजॉरिटी में हो रहा है, बेसिकली उसी के बेसिस पे टाउन्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है. सच एज इट कुड बी ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा. तो यही रीज़न था दोस्तों कि इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस होने के कारण हमें टाउन्स का फंक्शन क्लासिफिकेशन करना पड़ा. और हाँ, ये एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी है जिसके थ्रू हम किसी भी टाउन के डेवलपमेंट को टारगेट कर सकते हैं और एक उसे बेटर वे में कैरी ऑन कर सकते हैं. अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या ये ज़रूरी है, क्या ये मैंडेटरी है कि टाउन्स को हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही एग्जामिन कर सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है. तो आइए जानते हैं. अकॉर्डिंग टू मी, friends, we can examine the town from a multiple points of view, such as from the point of view of its origin कैसे हुई उसकी, क्या उसका पूरा रीज़न था, all that factors. on the basis of the site, मतलब साइट कैसी है, लोकेशन कैसी है, एक्सेट्रा.
सिचुएशंस कैसी हैं उसके आसपास, अगेन जियोग्राफी के बेसिस पे आसपास फिजिकल फीचर्स, रिलीफ्स, ये सारे एस्पेक्ट्स हो गए. इट कवर्स ऑल द ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स. देन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी एंड ऑल्सो फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. बट दोस्तों, आज के रिसेंट के समय में एक नया ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, दैट द जियोग्राफर्स आर continuously increasing their focus and their attention for the functional classification of towns. जी हाँ दोस्तों, जोग्राफर्स की आज की जो कम्युनिटी है बेसिकली वो टाउन्स के फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा कंपेल कर रही है और इसे ज़्यादा हद तक कंसिडर करती है. रीज़न ये है क्योंकि इसकी साइंटिफिक स्टडी करके इसे बहुत सारा डाइवर्स फील्ड में यूज़ किया जा सकता है. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन इज़ टू आइडेंटिफाई द रोल्स विद इन द अर्बन सिस्टम्स. सो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपको बेसिकली एक बैकग्राउंड बताने की कोशिश की रिगार्डिंग द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स. एंड अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से टाउन्स हैं जिनको फंक्शनली क्लासीफाई किया गया है और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं. Okay, so let's see the classification of towns based on its functions. Starting with the very first one, that is the administrative towns. जी हाँ दोस्तों, अब हम जानेंगे कि administrative towns किसे कहते हैं या basically क्या functions होते हैं with examples. Alright, the main function of the administrative cities or towns is to administer the country, state or any other administrative unit. जी हाँ दोस्तों, ऐसे टाउन्स जिनका मेन फंक्शन शासन व्यवस्था या एक तरह का डोमिनेंट फंक्शन कह लीजिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखना हो गया, शासन व्यवस्था चलाना या प्रशासन चलाना किसी भी कंट्री, स्टेट या किसी भी प्रोविंस का, तो ऐसे टाउन्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऐसा टाउन या सिटी जिसका मुख्य कार्य किसी भी देश, राज्य या अथवा प्रशासनिक इकाई के प्रशासन या शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना एवं उसे मेंटेन करना है, तो उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन की कैटेगरी में रखेंगे. अब इसमें कौन सी चीज़ें आते हैं, आइए देखते हैं. इट इंक्लूड्स ऑल द कैपिटल सिटीज़ ऑफ द कंट्री बट ऑल्सो ऑल द सेंटर्स ऑफ स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजनल हेडक्वार्टर्स ऑफ द कंट्री. So, friends, the administrative towns contains or includes the capital cities of the country. यानी किसी भी देश की जो राजधानी है या कैपिटल सिटी है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन ही कहलाएगी, बिकॉज उस कंट्री के जितने भी प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो वहीं पाई जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, एज इन द केस ऑफ द इंडिया, यू कैन कंसिडर द कैपिटल सिटी ऑफ द न्यू दिल्ली. सो इट कंटेन्स ऑल द important administrative headquarters and centers such as the parliament, which has the Lok Sabha and Rajya Sabha. Then we are having the PMO, Rashtrapati Bhavan, etc. Means when all the administrative units of the country which is contained by its capital is over there, then we can term it as an administrative town. But ये ज़रूरी नहीं है कि केवल ये कैपिटल सिटी तक ही सीमित हो, इसके और भी ब्रॉड डायमेंशंस हैं. आइए जानते हैं कैसे. For example, you can also consider the state capitals and the district center, district headquarters और किसी भी administrative division को भी आप consider कर सकते हैं, because वो भी administrative towns के अंतर्गत ही आएंगे. जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हर स्टेट के अपने खुद के कैपिटल्स होते हैं, तो वो बेसिकली वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सबसे इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुई, बिकॉज पूरे स्टेट को कहाँ से एडमिनिस्टर किया जा रहा है, उसके कैपिटल से. एंड इन द सेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू कंसिडर डिस्ट्रिक्ट, तो एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे टाउन्स होते हैं, कई सारी सिटीज़ होती हैं, तो कुछ टाउन्स के सोलिली यही फंक्शंस होते हैं कि दे आर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. वहाँ पास एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं, अलग अलग हेडक्वार्टर्स होते हैं, तो दे सर्व एज द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स. तो दोस्तों, अगर हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन को कंसिडर करें तो उनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट प्रेजेंट होती हैं. कौन सी होती हैं, आइए जानते हैं. सो इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ आर प्लेस्ड द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऑफ द रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. जी हाँ दोस्तों,
जैसा कि कहा जाता है कि द थ्री पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी आर द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये तीनों चीज़ शासन और प्रशासन का अभिन्न अंग हैं। आई मीन टू से दैट दे can work as, and in fact they work as the independent administrative unit, but collectively they are a part of the administration. For example, you can consider the various units such as the various government offices where all sorts of works are done, and for the legislative purpose you can consider the state legislature, and in terms of judiciary you can see the various district courts and high courts which are present over there. So they are the indispensable organs of the administration. तो यही तीन चीज़ें हैं जो कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में एक डोमिनेंट फॉर्म में पाई जाएगी। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को कंसिडर करते हैं, सच एज न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, पटना, भोपाल, चंडीगढ़, एजवाल, कोहिमा, एक्सेट्रा आर एसेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज़। जी हाँ दोस्तों, ये सारे ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स और सिटीज़ हैं क्योंकि ये किसी ना किसी स्टेट के कैपिटल्स हैं या इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स हैं। एज अर्लियर आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ द न्यू दिल्ली। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ। यस, लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ द उत्तर प्रदेश। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो टाउन रिस्पॉन्सिबल है या मेजरली एक डोमिनेंट फॉर्म रिस्पॉन्सिबल है वो होगा लखनऊ, विच इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने किसी टाउन को एक टर्मिनोलॉजी दे दी या उसे कैटेगराइज कर दिया अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन और अ डोमिनेंट फंक्शन, तो वो कोई और फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता या उसका कोई और डोमिनेंट फंक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो एक से ज़्यादा बार भी कंसिडर हम उसे कर सकते हैं। ऑल राइट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो मूविंग ऑन, सम फेमस एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड आर टोक्यो, मेक्सिको सिटी, सियोल, बीजिंग, कैरो, जकार्ता, पेरिस एंड लंदन। अगर आप वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं of the administrative town, such as you can consider the Tokyo, which is the capital of the Japan. Then we are having the Mexico City in the which is the capital of the Mexico itself. Then we are having the Seoul, capital city of South Korea, Beijing, capital of China, Cairo, capital of Egypt, Jakarta, capital city of the Indonesia. Then we are having Paris, which is the capital city of the France, and London, which is the capital city of the England. So these are some of the very important administrative towns and centers of the world. If you want, then you can note down the same. All right, so this was all about the administrative towns. Now we will jump on to the second, which is the defensive towns. So friends, जैसा कि नाम से ही और इमेज से पता चल रहा है कि ऐसे टाउन्स जिनका मेन फंक्शन या डोमिनेंट फंक्शन डिफेंस या सिक्योरिटी है, ऐसे टाउन्स को हम डिफेंसिव टाउन्स कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो सभी टाउन्स जिनको डिफेंस के पर्पस से बिल्डअप किया गया है, या ज़रूरी नहीं कि बिल्डअप ही किया गया हो, मतलब किसी भी नॉर्मल टाउन को ही डिफेंसिव टाउन में कन्वर्ट किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस विच इज़ प्रेवलेंट ओवर देयर। सो ऐसे सारे टाउन्स को हम डिफेंसिव टाउन की कैटेगरी में रखेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। द डोमिनेंट फंक्शन इन डिफेंस टाउन पर्टेन टू सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। मतलब ये हुआ कि किसी भी डिफेंसिव टाउन का जो डोमिनेंट फंक्शन होगा वो उस पर्टिकुलर एरिया या कंट्री के सिक्योरिटी और डिफेंस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही होगा। ऐसे टाउन्स की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। कहीं पे भी अगर दोस्तों पूरे कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी या इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेटन होती है तो डिफेंसिव टाउन्स वहाँ एक डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मोस्ट ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज used to be developed on the defensive sites. Forts and garrisons used to be constructed at the strategic places.
दोस्तों, अगर हम डिफेंसिव टाउन्स के हिस्ट्री या इनके ओरिजिन को समझने की कोशिश करें तो इसका एक बहुत ही इलैबोरेट या डोमिनेंट फॉर्म हमें देखने के लिए मिलता है इन द मेडिवल पीरियड। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसका जो ओरिजिन है वो स्ट्रिक्टली मेडिवल पीरियड में हुआ था, नहीं, ओरिजिन तो एंशिएंट पीरियड से ही चला आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में ओरिजिन ऑफ दी सेटलमेंट्स में बताया था कि कैसे डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था इन द ओरिजिन ऑफ दी सेटलमेंट्स, तो वहाँ से आप इसको बेटर रिलेट कर सकते हैं। बट जहाँ तक इसके बहुत ही इलेबोरेट और डोमिनेंट फॉर्म की बात है, यहाँ मतलब सबसे ज़्यादा ये भी प्रेवलेंट रहा तो ये मेडिवल पीरियड में था, जब हमें बड़े बड़े किले, दीवार यानी बाउंड्रीज जो कि डिफेंस के पर्पज से बिल्ड की जाती थी वो हमें इलेबोरेटली देखने के लिए मिली। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज दोस्तों हम सब जानते हैं कि मेडिवल जो पीरियड था हमारा वो एक इन्वेजन से भरा हुआ पीरियड था, मतलब एक कैप्चर ऑफ पावर, नए नए किंगडम्स इवॉल्व हो रहे थे और बहुत सारे नए टाउन्स एंड सिटीज़ डेवलप हो रहे थे। तो जब इतना ज़्यादा पॉलिटिकल केओस था, हर तरफ वॉर्स, वायलेंस, इन्वेजन्स, कैप्चर्स, ये सब बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे, तो डिफेंसिव टाउन्स का डेवलप होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। You can consider, for example, the entire period of the Delhi Sultanate in India and the Mughals when Mughal came to India. That was the period when the Mughals had to fought lots of war with the Indian rulers. They invaded various territories. So, at that time, the towns and cities which was used for the purpose of the defense or they were used as the defensive sites, they came to be known as the defensive towns. For example, the forts and garrisons used to be constructed at the strategic places. जी हाँ, अगर आप एलिमेंट्स ऑफ डिफेंस की बात करें तो उनमें फोर्ट्स और गैरिसन्स बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले करते थे। ऊंचे ऊंचे दीवारें या फोर्ट्स बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ट, उनको बिल्ड करके आप ये इंश्योर करते थे कि जो एनिमी है वो आपकी टेरिटरी में डायरेक्टली अप्रोच ना कर पाए और लोग सुरक्षित रहें। जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि कितनी ऊंची वॉल्स हैं। अब किसी भी आर्मी को इसको क्रॉस करना एक आसान बात नहीं होती थी उस समय, तो ऐसे फोर्ट्स, गैरिसन्स और ऐसी वॉल्स वगैरह उसमें बिल्ड की जाती थी फॉर द स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पर्पस। ऑलराइट, मूविंग ऑन, द डिफेंसिव टाउन्स हैव कैंटोनमेंट्स, बैरक्स, मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स, गैरिसन्स, एयरफोर्स बेसेस, एयरफील्ड्स, हार्बर्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, हेडक्वार्टर्स एट्सेट्रा। फ्रेंड्स, अगर हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डिफेंसिव टाउन्स के कई सारे एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं, सच एज दी कैंटोनमेंट्स, बैरक्स जहाँ पे आपकी आर्मी स्टैब्लिशमेंट होती है, जहाँ पे आपके ट्रूप्स रुकते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स वेयर द मिलिट्री पर्सनल एंड मिलिट्री मेंस आर गिवन द ट्रेनिंग्स, देन वी आर हैविंग द गैरिसन्स, द फोर्टिफाइड एरिया, एयरफोर्स बेसिस यानी पूरे एयरफोर्स बेसिस होते हैं हमारे, ये बेसिकली बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे बिल्ड किए जाते हैं सो दैट वी कैन अप्रोच द एनिमी टेरिटरी इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। देन वी आर हैविंग द एयरफील्ड्स यानी जहाँ से आपके एयरक्राफ्ट्स या फाइटर जेट्स टेक ऑफ या लैंड करते हैं, हार्बर्स जहाँ पे शिप्स एंकर करती हैं एंड वी कैन ऑल्सो हैव अ नेवल बिल्डअप ओवर देयर, strategic locations, headquarters, etc. So, these are the elements of the defensive towns in the modern context. Alright, तो हमने अब तक ये तो समझ लिया है कि defensive towns किसे कहते हैं। अब हम कुछ examples को consider करते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से towns हैं इंडिया के which serves as the defensive towns. Alright friends, now I am going to give you some examples of the Indian towns which also serves as the defensive towns. Well, we are having the towns like that of the Adampur, which is situated in the Jalandhar district of the Punjab. Then we are having the Ambala, situated in Haryana. Next is Halwara, which is a township in Punjab. Jalandhar is again the district of Punjab. जामनगर ऑफ गुजरात, जोधपुर ऑफ राजस्थान, मो विच इज सिचुएटेड इन द इंदौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, पठानकोट इन पंजाब, उधमपुर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एट्सेट्रा.
So these are some of the very important defensive towns of the India. इन सभी टाउन्स में आप एक बहुत ही कॉमन सी बात ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि इनकी जो लोकेशन है, यानी जिस भी स्टेट्स में ये सिचुएटेड हैं, फॉर एग्जांपल द स्टेट्स लाइक पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, these are the very important strategic locations for the India because these states are having their borders with the countries like the Pakistan and China. That's the purpose why, or that's the reason why they have been developed as the defensive town, so that we can approach our enemy territory as soon as possible in the war times or at the times when our security is threatened. Okay, moving on. In defensive towns there is a clear division of the land use between the civil and military authorities. अगर हम डिफेंसिव टाउन्स को कंसिडर करें तो डिफेंसिव टाउन में एक बहुत ही क्लियर डिवीजन या स्पेसिफिकेशन होता है फॉर द लैंड यूज रिगार्डिंग द सिविल एंड मिलिट्री पर्पसेस और अफेयर्स. फॉर एग्जांपल आर्मी के बेसेस होते हैं, कैंटोनमेंट एरियाज होते हैं आपके, और आपके कुछ सेपरेट जोन्स होते हैं जहाँ पास एंट्रीज अवेलेबल नहीं होती या अलाउड नहीं होती. तो ऐसे सारे डिविजन्स देखने के लिए मिलते हैं बिटवीन द सिविल एंड मिलिट्री अथॉरिटीज. दिस इज नेसेसरी टू मेंटेन सिक्योरिटी, दो ऑफन मैनी टाउन पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द मिलिट्री. जी हाँ दोस्तों, अगर हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टाउन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत ही नेसेसरी है या नेसेसरी होता है नेशन की इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना. इसके अलावा इसका एक डायमेंशन और भी है कि बहुत सारे द टाउन पीपल्स, मतलब जो शहर के लोग हैं या शहर के ही नहीं रूरल एरियाज़ के भी जो लोग हैं, दे आर एम्प्लॉयड बाय द मिलिट्री. मिलिट्री उनको एम्प्लॉयमेंट देती है और सर्विस करने का मौका देती है. सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग सिक्योरिटी. तो ये था दोस्तों बेसिकली हमारा डिफेंसिव टाउन्स. अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टाउन पे, विच इज़ द कल्चरल टाउन्स और द कल्चरल सेंटर्स. आइए जानते हैं और समझते हैं क्या है बेसिकली ये. नाम सुन के आपको दोस्तों इतना तो ज़रूर पता लग गया होगा कि दीज आर द टाउन्स विच हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद द कल्चर. जी हाँ, आप सही हैं. आइए देखते हैं कैसे. These cities perform either religious, educational और recreational functions. यानी इन cities का basically function क्या है? Yes friends, these cities or towns perform the various religious, educational and the recreational functions which are the parts of our culture. So such cities can be termed as the cultural towns or cultural centers. आइए इसके और एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं. इन दीज टाउन्स वन में फाइंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, हॉस्टल्स, चर्चेस, प्लेग्राउंड्स, पार्क्स एंड शॉपिंग सेंटर्स. ऑलराइट, सो हियर यू आर सपोज टू फाइंड द डाइवर्सिटी ऑफ places and centers, such as you will easily find the school, colleges, libraries and hostel which serve the educational purposes. Then you are also supposed to find the churches, mosques, temples, etc. which will serve the religious purpose. Then you will find the playgrounds, parks, shopping centers and malls, etc. which serve the recreational functions. All right friends, तो ये सारी चीज़ें आपको एक कल्चरल टाउन में या सेंटर में देखने के लिए मिलेंगी. अब आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड. द सिटीज़ ऑफ ऑक्सफोर्ड and Cambridge in England, Harvard in USA, Heidelberg in Germany, Leiden in the Netherlands, etc. are good examples of the cultural and educational towns. So friends, these are the examples of some of the country and towns which are the very famous cultural towns and centers of the world. Now we will jump on to the cultural towns or cultural centers of the India and we will see its examples also. So the cities of Prayagraj, Amritsar, Ajmer,
Bodh Gaya, Dharmshala, Pushkar, Varanasi, Mathura, Ujjain, etc. are the religious centers of India in which the religious rituals are performed, and the markets are full of religious books and accessories required for the religious rituals. Friends, as we know that the India is the land of the cultural diversities and has very rich and glorious culture. That's the reason why there are lots of cultural towns in India and very elaborate cultural beauty. India is having the plethora of religious centers and the religious towns. I am going to enumerate you few important and very famous of them, such as the Prayagraj of Uttar Pradesh, Amritsar of Punjab, Ajmer in Rajasthan, Bodh Gaya in Bihar, Dharmshala in Himachal Pradesh, Pushkar in Rajasthan, Varanasi in Uttar Pradesh, Mathura in Uttar Pradesh, Ujjain in Madhya Pradesh, etc. are some of the very elaborate, grand religious centers of the India. Very grand and elaborate religious rituals are performed over here. If you got a chance to visit the markets, then you will witness that the markets are full of the religious books and all the accessories which are required for the religious rituals. All this reflects the cultural richness of the cultural towns of the India. Well, apart from the religious centers or religious towns, there are some educational towns in India as well. Let me give you the examples of the towns like that of the Aligarh, situated in Uttar Pradesh, Kharagpur in West Bengal, Pantnagar in Uttarakhand, and Shanti Niketan in West Bengal, etc. So these are some of the examples of the educational cultural centers of the India. So guys, this is all about the cultural towns or the cultural centers. Alright friends, now we will know about the fourth category of towns, which is the collection centers or the collection towns. तो क्या होते हैं कलेक्शन टाउन्स, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ मेड अप ऑफ द कलेक्शन ऑफ समथिंग, मतलब जहाँ पे किसी चीज़ को एकत्र किया जा रहा है या एकत्रित किया जा रहा है फॉर सम पर्पस. इट कुड बी फॉर द इकोनॉमिक पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड्स एंड सर्विसेज एक्सेट्रा. तो बेसिकली ऐसे टाउन्स को हम कलेक्शन टाउन्स या सेंटर्स कहेंगे. वो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि गुड्स, मिनरल्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, जिनको कलेक्ट करके बेसिकली एक प्लेस पे बाकी सब जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या उनको एक्सपोर्ट किया जाता है. तो ऐसे टाउन्स को हम कलेक्शन टाउन्स कहेंगे. आइए जानते हैं कैसे. द माइनिंग टाउन्स, फिशिंग पोर्ट्स, लंबरिंग सेंटर्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कलेक्शन सेंटर्स और टाउन्स. जी हाँ दोस्तों, कलेक्शन टाउन या सेंटर्स के कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सच एज दी माइनिंग टाउन्स, जहाँ पे किसी स्पेसिफिक मिनरल या वैरायटी ऑफ मिनरल्स की माइनिंग हो रही हो, फिशिंग पोर्ट्स और द लंबरिंग सेंटर्स. Guys, the lumbering is all about the cutting and preparing the timber as well as various other forest woods for the economic purpose. So, such center falls under the category of the collection centers. क्योंकि इन सारी एक्टिविटीज़ जो कि माइनिंग, फिशिंग या लंबरिंग हो गई, इनके थ्रू किसी ना किसी चीज़ का कलेक्शन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंसिडर द केस ऑफ द माइनिंग, देन देयर इज अ क्लियर collection of the various minerals. In fishing, there is a collection of the various marine produces for the consumption. In case of the lumbering, various woods are collected for the purpose of the trading and economic benefit. That's the reason why the collection of such stuffs make such towns as the collection towns or the collection centers. Alright, now let me give you some very famous examples of the collection centers of the India. Well, the urban places of Jawar near Udaipur in Rajasthan, Digboi in Assam, Ankleshwar in Gujarat, Haldwani
and Kotdwar in Uttarakhand, Machilipatnam in Andhra Pradesh, Cuddalore in Tamil Nadu, etc. are some of the examples of the collection centers. जी हाँ दोस्तों, तो ये हैं कुछ फेमस और इम्पॉर्टेंट कलेक्शन सेंटर्स ऑफ इंडिया. आप इन्हें गूगल करके डिटेल में सर्च भी कर सकते हैं. Alright, now moving on. They may be large in size such as the Raniganj, Hazaribagh in Bihar, Ipoh in the tin-rich Kinta Valley of Malaysia, or Kuwait and Abadan in the oil-producing regions of the Kuwait and Tehran respectively. तो कई बार क्या होता है, ये साइज में काफ़ी बड़े हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा एलैबोरेट हो सकते हैं, सच एज द रानीगंज, हजारीबाग इन बिहार, इपोह विच इज़ इन द टिन रिच किंटा वैली ऑफ द मलेशिया, चाहे वो कुवैत या एबडॉन जो कि बेसिकली ईरान में है, वहाँ के ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स हों ऑफ द कुवैत एंड तेहरान. तो दीज आर सम ऑफ द लार्ज कलेक्शन सेंटर्स, बिकॉज यहाँ पे जो भी चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं सच एज दी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एंटायर वर्ल्ड में हो रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर वेस्ट एशिया में कोई भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और इट इज़ सर्विंग एज द कलेक्शन सेंटर, तो वहाँ से जो क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम निकल के जाएगा वो पूरे वर्ल्ड के सब पार्ट्स में जाएगा. सच एज इट विल गो इन द एशिया, यूरोप, in the American continent, it will go into the Australia, etc. That's why these are some of the major collection towns and centers of the world. These towns may have industries indulged in the mineral mining, smelting and refining. अब इन टाउन्स के अंदर या ऐसे टाउन्स के अंदर कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होने वाली हैं जो कि कई सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी, सच एज दी माइनिंग ऑफ द मिनरल को माइन करना, प्लस उसको स्मेल्टिंग करके एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना और साथ ही साथ उसकी रिफाइनिंग भी करना. ये तीनों चीज़ें जब एक जगह एक साथ होंगी, सो दैट एरिया विल बिकम अ मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर, एंड जो भी आउटपुट निकलेगा दैट विल सर्व एज द कलेक्शन आइटम और द कलेक्शन प्रोडक्ट. The shops in these towns sell mining equipments and special cloths needed for the miners. जी हाँ दोस्तों, जब इन टाउन्स में इतनी सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या उससे एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वहाँ की जो मार्केट्स हैं या उन टाउन्स की जो शॉप्स हैं वो उसी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बेचेंगी, बिकॉज डेफिनेटली उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है. वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? वो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कंसिडर द वेरियस माइनिंग इक्विपमेंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द माइनिंग, एंड इट कुड बी स्पेशल क्लोथ्स for the miners and various other accessories and the survival instruments or the survival gadgets for the miners. तो ये सारा सिनेरियो होता है associated with the collection center और collection towns. मैं उम्मीद कर रहा हूँ गाइस कि आपको बातें समझ में आ रही हैं. जो भी टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं आप चाहें तो उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग शुड बी योर प्रायोरिटी. ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ लेट अस जंप टू our next town which is known as the production centers or production towns. तो बेसिकली क्या होते हैं प्रोडक्शन सेंटर्स या प्रोडक्शन टाउन्स, आइए जानते हैं. अगेन एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, ऐसे टाउन्स या ऐसे सेंटर्स विच आर इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, दे कैन बी टर्म्ड एज द प्रोडक्शन सेंटर्स और प्रोडक्शन टाउन्स. आइए कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं. ओके, सो urban centers, towns and cities in which some kind of manufacturing is the major function is known as a production centers. जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई भी अर्बन यूनिट या अर्बन सेंटर, टाउन या सिटी जिसमें किसी ना किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हो रहा है एज अ मेजर फंक्शन और अ वेरी डोमिनेंट एक्टिविटी, देन दैट कैन बी टर्म्ड एज द प्रोडक्शन टाउन्स. इजी समझ में आ रहा है? ऑल राइट, नाउ द मैन्युफैक्चरिंग सिटीज आर जनरली वेल कनेक्टेड विद द एरियाज ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द मार्केट्स वेयर द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कैन बी सोल्ड. फ्रेंड्स, कोई भी प्रोडक्शन टाउन या मैन्युफैक्चरिंग सिटीज है, उसका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक या नेचर देखा गया है कि दे आर जनरली वेल कनेक्टेड विद द एरियाज ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द मार्केट्स. मतलब
वो उस एरिया से जहाँ से रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो और मार्केट्स काफ़ी नियर हो, ऐसे एरिया से वेल कनेक्टेड होते हैं, सो दैट वेयर द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कैन बी सोल्ड। ऐसा बेसिकली क्यों होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बिकॉज ऐसी सिटीज़ या ऐसे टाउन्स का डोमिनेंट फंक्शन या मेजर फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन। एग्जैक्टली, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए। अब बात आती है कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये इंडस्ट्रीज़ में होती है, जिसके लिए हमें प्रॉपर इंडस्ट्रियल सेटअप करना पड़ता है। अब इंडस्ट्रीज़ को सक्सेसफुली प्रोडक्शन करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? वेल, दे नीड रॉ मटेरियल। जी हाँ, उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए जिसे वो प्रोसेस करके एक आउटपुट और एज अ प्रोडक्ट का शेप दे सकें। अच्छा ठीक है, रॉ मटेरियल मिल गया, इनपुट आ गया, प्रोसेसिंग हो गई, आउटपुट के फॉर्म में प्रोडक्ट भी तैयार हो गया। अब नेक्स्ट सीरीज क्या होगी? जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप होगा उसे सेल करना, और सेल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मार्केट्स की। दैट्स वाई दीज सिटीज मस्ट बी कनेक्टेड विद द मार्केट्स। आई मीन टू से दैट कि ऐसे बहुत सारे लोकेशनल फैक्टर्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए, सच एज दी लेबर, मैन पावर, कैपिटल, वाटर, एनर्जी रिसोर्सेज एक्सेट्रा, बट among them the raw materials and the markets are quintessential and plays a very decisive role in the manufacturing centers. All right, now moving on. In the manufacturing towns as collecting centers, transportation is very important. अब स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग टाउन या सेंटर में एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो उसकी लाइफलाइन होती है। इट इज़ इंडिस्पेंसिबल। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है या किसी भी इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो इंडस्ट्री से निकलते हुए मार्केट्स में फिर हमारे पास पहुंचता है। और केवल मार्केट्स ही क्यों, इनफैक्ट जब प्रोडक्शन के लिए किसी भी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं तो रॉ मटेरियल्स को इंडस्ट्री तक पहुंचाने का काम भी कौन करते हैं? ट्रांसपोर्ट्स करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई सेड दैट ट्रांसपोर्टेशन इज एन इंडिस्पेंसिबल फॉर इंडस्ट्रीज एज वेल एज एनी सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। ऑलराइट, तो ये था हमारा प्रोडक्शन सेंटर्स और टाउन्स। अब हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स को। वेल, द भिलई ऑफ छत्तीसगढ़, भद्रावती इन कर्नाटका, बोकारो in Jharkhand, Coimbatore in Tamil Nadu, Dhanbad in Jharkhand, Durgapur in West Bengal, Jamshedpur in Jharkhand, and Vijayanagram of the Andhra Pradesh, along with the Vishakhapatnam, etc., are some of the important manufacturing centers of India. जी हाँ दोस्तों, ये कुछ बड़े और महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं इंडिया के। They are some of the big and giant iron and steel producing cities of the India. तो इन सिटीज़ में या टाउन्स में एक बहुत ही साइजेबल अमाउंट में मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। बहुत सारा इंडस्ट्रियल सेटअप देखने को मिलेगा इन टाउन्स में। दैट्स वाई दीज टाउन्स आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मूविंग ऑन, बर्मिंघम आयरन स्टील इन इंग्लैंड, Rochester and Detroit, iron and car manufacturing in America, and Ahmedabad and Surat, famous for the textile manufacturing in India, are some of the important examples of the manufacturing towns. So friends, in England, the city of the Birmingham, which is famous for its iron and steel production, is a famous production center. Rochester and Detroit, they are famous for the iron and car manufacturing. Yes, in fact the Detroit is very famous for its automobiles in the entire world. It is also known by its nickname, which is the Motor City, which is situated in America. In India, the Ahmedabad and Surat are the hub of the textile manufacturing. So again, these are the very important example which I gave you. For your convenience, you can note down. So friends, this was all about the production centers or towns. Alright friends, I know कि lecture बहुत लंबा हो रहा है, so kindly pardon me for it because sometimes it's like you can't do much about it. So please cooperate with me. I know guys, you're having a lots of potential that you can realize all this lecture with your fullest caliber. Well, without wasting in time, let's move on and finish up the topics.
Now let us discover about the transfer and distribution centers or the transfer and distribution towns. तो आइए जानते हैं क्या होता है ये। एज अगेन जो नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि ऐसे टाउन्स बेसिकली जो न किसी प्रोडक्ट गुड्स या सर्विसेज के ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सो वी कैन टर्म सच टाउन्स एज द ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूशन टाउन्स। ऑलराइट, वेल द मेन फंक्शंस परफॉर्म्ड एट द ट्रांसफर सेंटर्स आर द ट्रेड, कॉमर्स एंड सर्विसेज। तो दोस्तों कुछ मेन फंक्शंस जो कि परफॉर्म किए जाते हैं बाई ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूशन टाउन्स वो हो सकते हैं सच एज ट्रेड एंड व्यापार हो गया आपका, बिजनेस अगेन विच इज़ अ पार्ट ऑफ इट। देन वी आर हैविंग द कॉमर्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ एज वेल एज सर्विसेज। ऐसा इसलिए भी होता है दोस्तों क्योंकि जो ट्रांसफ़र और डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ लाइक द ट्रेड, commerce, commercial activities and services. That's why when these activities are carried out in certain towns or cities, that automatically becomes the transfer and distribution towns. Moving on, towns which are concerned with the transfer and distribution of the goods, however, have trade as their major function. Exactly वही सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि जो भी टाउन्स हैं, मतलब if they are concerned with the transfer and distribution of the goods and services, it means they are having their trade as their major or the dominant function. Now it may include several types of towns such as for example, you can consider the market towns, seaports and financial towns. Market towns are basically characterized by the markets, means there you will witness the chain of markets, a wide range of shops, stores, warehouses, go downs, कोल्ड स्टोरेजेस एंड होलसेल मार्केट्स। तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको कलेक्टिवली मिलेंगी जो कि वैरायटी और डाइवर्सिटी ऑफ शॉप्स हो गई, आपको स्टोर्स हो गए, वेयर हाउसेज हो गए, गोडाउन्स हो गए फॉर स्टोरिंग द प्रोडक्ट्स, कोल्ड स्टोरेजेस हो गए, आपके होलसेल मार्केट्स हो गए, इट मीन्स दैट टाउन कैन बी टर्म्ड एज अ मार्केट टाउन which is again the part of the transfer and distribution center. Okay, now let me give you example. The most important commercial centers are Mumbai, Kolkata, Chennai, Ahmedabad, Gwalior, Indore, Ludhiana, Muzaffarpur, Phagwara, which is a city of Punjab, and Surat, etc. These are some of the most important commercial centers of India. Now, friends, यहाँ पास इन जो टाउन्स के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, इनमें आप कुछ में से एक बात कॉमन नोटिस कर पाएंगे कि इन टाउन्स की जो लोकेशन है इट इज़ नियर टू अ कोस्टल एरिया, मतलब दे आर नियर द सी वेज। सी साइड या कोस्टल लोकेशन होने से इनको फ़ायदा क्या है कि दे कैन ईजली कैरी ऑन विद देयर ट्रेड्स एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। That's the reason why they are having such important economic and strategic location. Okay, let me give you some more examples like that of the Tokyo in Japan, Sao Paulo in Brazil, New York in US, Shanghai of China, Mumbai of India, Los Angeles of California, which is a state of the US, Buenos Aires of Argentina, Kolkata of India and the Rio de Janeiro of Brazil are all important seaports as well as trading and distribution centers. ये जो सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए दोस्तों, ये सभी बहुत ही important seaports हैं as well as trading and distribution centers हुए। तो ये था हमारा ट्रांसफ़र एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और टाउन्स। ओके, सो मूविंग ऑन to the next category we are having the resorts. जी हाँ दोस्तों, resorts बहुत ही प्यारी लोकेशन में resorts बनाए जाते हैं amidst the nature and its scenic beauty. आप में से कोई भी अगर resort गया हो तो comment section में बता सकता है। Well, आइए इसके बारे में जानते हैं क्या होते हैं resorts. The urban places which cater the recreations needs of the people are known as resorts और रिक्रिएशन टाउन्स। ऐसे अर्बन प्लेसेस जो कि बेसिकली बिल्डअप किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द रिक्रिएशन और द एंटरटेनमेंट नीड्स ऑफ पीपल,
then they are known as the resorts or the recreation towns. रिजॉर्ट्स को हम एक नाम और भी दे सकते हैं, रिक्रिएशन टाउन्स, पर इनकी लोकेशन बहुत ही स्पेसिफिक होती है. आइए जानते हैं कैसे. वेल, these towns may be based on health giving water, which is the hot springs, seaside recreation, mountain climbing, sports facilities, national parks, tiger reserves and the place of aesthetic beauty. जी हाँ दोस्तों, जो रिजॉर्ट्स की लोकेशन होती है वो नेचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है. इनफैक्ट दे आर बिल्ट अराउंड द एरियाज हैविंग द ब्यूटीफुल नेचर एंड द सीनिक ब्यूटी ऑफ द नेचर इज प्रेजेंट ओवर देयर. ये कई जगह लोकेटेड हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल दी नियर दी हॉट स्प्रिंग्स, जिसे हम गर्म पानी का झरना भी कहते हैं, एज वेल एज अलॉन्ग द सी साइड विच प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ रिक्रिएशन. Along with all these, the resorts also provide the facilities for various adventurous sports such as the mountain climbing and various sports facilities. It could be whitewater rafting, paragliding, etc. So that's why they're also known as the recreation towns. Apart from all these, the resorts are also found around the national parks, tiger reserves, and the place of the natural, of the aesthetic beauty, from where you can adore the nature. Moving on, resorts and recreational towns have many hotels to accommodate visitors and also provide sporting facilities such as the golf courses, swimming pools, trekking and skiing. अब जो recreational towns या resorts होते हैं उनके कई सारे elements होते हैं such as the hotels to accommodate the visitors, because डेफिनेटली ऐसी जगह पे जब टूरिस्ट या विजिटर्स आएंगे तो उनको रहने के लिए होटल्स की रिक्वायरमेंट होगी. दे ऑल्सो प्रोवाइड द स्पोर्टिंग फैसिलिटीज फॉर द स्पोर्ट लवर्स सच एज द प्रॉपर गोल्फ कोर्सेज वेयर यू कैन प्ले द गोल्फ. देन वी आर हैविंग द स्विमिंग पूल्स, ट्रैकिंग एंड स्कीइंग विच इज अगेन अ एडवेंचर स्पोर्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द रिक्रिएशनल टाउन्स. ऑलराइट फ्रेंड्स, now let me give you some important example of the recreation or the resort towns. Well, these are the Bageshwar of Uttarakhand, Dehradun in Uttarakhand, Dalhousie in Himachal Pradesh, Darjeeling in West Bengal, Dharamshala again in Himachal Pradesh, Gulmarg situated in Jammu and Kashmir, Kullu and Manali of the Himachal Pradesh, Mount Abu of Rajasthan, Nainital of Uttarakhand, Pahalgam of Jammu and Kashmir, Panchmari in Madhya Pradesh, Ooty in Tamil Nadu, and the Rani Khet in Uttarakhand, etc. are some of the examples of the resort towns or the recreational towns. तो ये सभी दोस्तों बहुत ही important hill stations, famous resort towns हैं, recreation towns हैं. They are some of the finest tourist destinations of the India as well. Moreover, they have numerous entertainment facilities such as theaters, cinemas, nightclubs and children parks. जी हाँ दोस्तों, recreational towns केवल नेचर की ब्यूटी तक ही कन्फाइंड नहीं है. They are also having their various entertainment facilities for their tourists or their visitors, such as they are having the theaters, for the cinemas and nightclubs, children parks, restaurants, etc. So all this is a scenario of resort or a recreational town. All right friends, now let us jump to the next category of town, which is the residential towns. अच्छा, ये कितना easy है ना दोस्तों. टाउन्स के नाम से ही क्लियर हो जाता है कि आफ्टर ऑल उसका पर्पस या डोमिनेंट फंक्शन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कंसिडरिंग द रेसिडेंशियल टाउन, इसका मतलब सीधा से ये हुआ कि town for the purpose of the resident or which provide the residential area, that can be termed as a residential towns. आइए इसको जानते हैं. दोस्तों, हमने ढेर सारे टाउन्स देखे, उनका डोमिनेंट या मेजर फंक्शन देखा, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जाने. तो जहाँ तक बात आती है रेसिडेंशियल टाउन्स के मेजर फंक्शन या डोमिनेंट एक्टिविटी की, तो वो केवल और केवल लोगों को रहने के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड करना और एक रेसिडेंशियल एरिया क्रिएट करना, यही इस टाउन का मेन फंक्शन है.
दोस्तों आपने बहुत से ऐसे टाउन्स देखे होंगे विच आर हैविंग द बल्क ऑफ पॉपुलेशन विथ लॉट्स ऑफ houses, accommodation, buildings, apartments, flats, etc. Exactly, they are the residential towns because at the end of the day they are providing an accommodation or a resident for the people to live. आइए इसको भी जान लेते हैं ब्रीफ में. Some of the towns and cities are developed just to provide residential accommodation. जी हाँ, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि उनका मेन कार्य ही यही है कि लोगों को रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, स्पेशली किसके लिए? अर्बन पीपल के लिए. नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. इन दिल्ली, रोहिणी, इंदिरापुरम, सरस्वती विहार, जाकिर नगर एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द रेसिडेंशियल टाउन्स. पंचकूला नियर चंडीगढ़ एंड प्रतापपुर नियर मेरठ आर एसेंशियली रेसिडेंशियल टाउन्स. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन टाउन्स के विच आर रेसिडेंशियल इन नेचर. लेट मी गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स. वेल, द सिमिलर रेसिडेंशियल टाउन्स आर फाउंड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, जयपुर एक्सेट्रा. तो ये जो सारी सिटीज़ हो गई आपकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, जयपुर एक्सेट्रा, इन सारी सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स पे मीन्स इन टाउन्स के थोड़ा आउटर एरिया में, आउटर बाउंड्री पे मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टाउन आपको रेसिडेंशियल एरिया या रेसिडेंशियल टाउन्स देखने को मिलेंगे. आप चाहते हैं तो उसे नोट डाउन कर सकते हैं. ऑल राइट फ्रेंड्स, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेसिडेंशियल टाउन्स. ओके, सो नाउ let us move to the last but not the least functional classification of town, which is actually a mixture of all the functions, which is the towns of diversified functions. जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने जितने भी टाउन्स पढ़े उनके एक पर्टिकुलर फंक्शन होते थे या कोई एक फंक्शन मेजर एक्टिविटी हुआ करता था उस पर्टिकुलर टाउन का या एक डोमिनेंट फॉर्म में हुआ करता था. जो ये कैटेगरी है, ऐसे टाउन्स में कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या फंक्शन मेजर या डोमिनेंट फॉर्म में नहीं होता है. इट इज रादर अ मिक्सचर ऑफ वेरियस फंक्शन. दैट्स व्हाई वी पुट सच टाउन्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द टाउन्स ऑफ डाइवर्सिफाइड फंक्शंस. तो आइए इसको भी जान लेते हैं दोस्तों. मोस्ट ऑफ द टाउन्स ऑफ इंडिया आर मल्टी फंक्शनल. एग्जैक्टली, ज़्यादातर जो आज के टाउन्स हैं इंडिया के, दे आर मल्टी फंक्शनल इन नेचर बिकॉज बहुत से ऐसे टाउन्स हैं जो इंडिपेंडेंट वे में वर्क करना चाहते हैं. फॉर दैट पर्पज they are getting multifunctional in nature. The capital cities are also the commercial, manufacturing, cultural and recreational centers. जो आपकी capital cities हो गई states की या country की, along with being a commercial center or a manufacturing center, they are also the cultural and recreational centers. कैपिटल सिटीज़ के साथ ये केस है कि इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है. दैट्स वाई दे गेट कन्वर्टेड टू द टाउन्स ऑफ डाइवर्सिफाइड फंक्शंस विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम. इसके साथ ही साथ दोस्तों एक जो ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है या एक चेंज जो देखा गया है टाउन्स में, वो ये है कि ओवर द स्पेस एंड टाइम द फंक्शंस ऑफ टाउन्स चेंज. जी हाँ दोस्तों, समय के साथ किसी भी टाउन के फंक्शंस या डोमिनेंट फंक्शन कह लीजिए उसमें चेंजेस आ सकते हैं. It depends upon the situations over there. For example, you can consider the cities like Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Visakhapatnam, Jaipur, Prayagraj and Varanasi are performing highly assorted functions. दोस्तों हम सब जानते हैं कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, they are the four metropolitan cities of the India and the most developed towns of the India because they carry on with the lots of and the diversity of the functions as well as they are the multifunctional in the nature. The same footsteps are followed by the Visakhapatnam and the Jaipur, and nowadays the Prayagraj and Varanasi are also getting into the same category. For example, earlier or even now sometime it was believed that the Prayagraj and Varanasi are solely the religious or the cultural towns of the India, but these towns along with maintaining this identity are also performing the diversity of functions. I mean, they're performing the highly assorted functions which nobody earlier believed. तो basically यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों टाउन्स ऑफ डाइवर्सिफाइड फंक्शंस में. आप एक बार इसे
देख लीजिएगा। Alright guys, first of all, let me take a deep breath. With the end of this topic, our very lengthy and important series of the human settlements came to end. Yes guys, we have covered the entire human settlements in very detailed and elaborate manner. We touched each and every important topic associated with it. I'm sorry guys, I'm not able to repeat it once more. You can read it from the screen, and I have made video on each of this topic. Please go and watch all the parts of this series so that your all confusion gets clear. Guys, I know that few topics are left, but don't bother about it. I will make separate video for it somewhat later on. Now, as I've mentioned in the starting of the video itself, that I have a question for you to answer at the end of the video. So here we go. This is the question and you have to text your answer. The question is, which among the following was not the reason behind the origin of towns? So guys, these are the four options which are provided to you. One is correct. Please text your answer in the comment section. You'll be able to answer this question very easily if you have seen my previous part regarding the topic urban settlements. Alright, so please do comment your answer. Guys, if you're having any sort of doubt or query regarding today's lecture or topic, then you can kindly let me know in the comment section. I will definitely help you out. तो अब आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम कुछ नई चीज़ें जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे. Till then, please stay tuned with us. Keep watching our lectures. And yes, please don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel and videos. And don't forget to press the bell icon so that you can get notification whenever we upload our videos. Thanks a lot for watching. Thank you so much guys.